May June 2019 variant 33. So let's start. Look at question number 1, guys. When an economy be said to be economically inefficient? Remember, economically efficient कब होती है आपकी economy? When you have productive plus allocative efficiency together, which is Pareto optimality. So when is the economy not Pareto optimal? Basically, this is what they are saying. A, when it is possible to make some people better off without making other people worse off. B, when the distribution of income is socially unacceptable. C, when the government sector is growing at the expense of the private sector. And D, when wage rate rises faster than the production. So remember, for the economy to be economically efficient, we should have both productive efficiency plus allocative efficiency, which means that the economy is Pareto optimal. And when the economy is not economically efficient, when it is possible to make someone better off without making someone else worse off. Yeah, good job. It should be A, because Pareto optimality की definition ही है कि an economy is Pareto optimal or Pareto efficient when it is impossible to make someone better off without making someone else worse off. Look at question number 2. The diagram shows the cost and benefit curves for a good in a free market. सही जी, ये आपके पास marginal private cost है, marginal social cost, social benefits, private benefits. Which combination is correct? सही तो आपको बताना है कि free market में allocate हुआ है. Good. Now you have the actual output and the social optimal level of output. Remember, social optimal कब होगा आपका? जब marginal social benefits are equals to the marginal social cost. When you have taken into account the external cost as well as the external benefit. तो social optimal point जो है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए इस point पे, where the marginal social cost and marginal social benefits are equal, which means Q3 and P3. सही है भाई? P3 Q3 P3 Q3. But what should be the actual output level? Actual output level क्या होगा जहाँ पे consumers and producers are ignoring the external cost and external benefits, which means the marginal private cost should be equal to the marginal private benefits. So this point would be this one, P2 and Q2. So the actual output is P2 Q2 while the socially optimal is P3 Q3. Yeah, it should be option B. Look at question number 3. A food processing firm discharges wastewater into the lake next to its factory. What could reduce the difference between the private cost and the social cost for the firm's action? Remember, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? You need to make sure that the the external costs are internalized by the firm. Tax लगाओ, सही है, या कोई इस तरह का कुछ हो जिससे उनकी cost of production increase हो जाए ताकि supply कम हो. So what are the options? A, local residents are given the right to buy the farm's food at discount. B, the government subsidizes the food processing farm. C, the lake is bought by the food processing farm. And D, wastewater flows from lake into the sea. देखो, अगर local residents are given the right to buy the farm's food at a discount price होगा ना, basically you are not increasing the cost of production. आप cost of production थोड़ी increase कर रहे हो. सही, आप उनके लिए प्राइस लो कर रहे हो सकता है मे बी दे विल प्रोड्यूस मोर बिकॉज जब आप फूड डिस्काउंट पे दोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी. यू हैव टू कम अप विद अ पॉलिसी दैट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन, जिसमें आप इंटरनलाइज करो कॉस्ट को, व्हिच मींस दैट द लेक शुड बी बॉट बाय द प्रोसेसिंग फर्म. प्रोसेसिंग फर्म जो है वो लेक खरीद ले, सही है, और उसकी कॉस्ट बेयर करे, और जब वो कॉस्ट बेयर करेगी ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सप्लाई का विल शिफ्ट बैक. इज दैट क्लियर? जी, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. द डायग्राम शोज अटेनेबल इन डिफरेंस कर्व्स I1 एंड I2. दोनों अटेनेबल हैं, मतलब दोनों आपके बजट में है. मेरे बच्चे मुझे ऑप्शन तो पढ़ने दो. फॉर गुड X एंड Y, which point represents the highest level of satisfaction? कौन सा पॉइंट है highest level of satisfaction का? Yeah, obviously it should be D, because D is higher in difference curve. Higher in difference curve illustrates higher utility.
सही, एंड सिंस बोथ आर अटेनेबल, दोनों के दोनों आपके उसमें है, तो आप जो है वो पॉइंट डी को कंज्यूम कर लोगे। पॉइंट सी हो सकता था, लेकिन पॉइंट सी अटेनेबल नहीं है, और वो आपके हायर इंडिफरेंस का सबसे ज्यादा पॉइंट सी होता है, बट इट इज नॉट अटेनेबल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द टेबल shows a substitution effect and income effect for a given good and an inferior good as the price of a good changes. Which combination is correct? So you have two types of good, एक given है, एक inferior है, और दो आपके पास प्राइस चेंजेस है, प्राइस राइज भी है, प्राइस फॉल भी है। अब आपने बताना है कि डिमांड चेंज फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगी, और फ्रॉम इनकम इफेक्ट क्या होगा। सही है, व्हाट आर द इनकम एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन बोथ द केसेस। तो कौन से वाले गुड का सही है? अच्छा जी, A is given good if the price falls, demand will be positive and income effect will be negative. A जो है वो, हाँ A सही है। B में क्या given good rise positive positive, no it won't work. Inferior good में क्या है, price fall negative negative, नहीं, substitution effect will be positive. And D क्या है, inferior rise demand change is a negative. income नहीं, हाँ A होगा, that both income effect, बेटा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा ना। इंफीरियर गुड्स में भी आपने देखा है, अगर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ऑल्दो द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेज द इनकम इफेक्ट। दैट इज व्हाई आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है इंफीरियर गुड में इफ देयर इज अ फॉल इन द प्राइस। सही है, और उसमें आपका नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा, बट द इनकम इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ इसमें होगा ना, given goods के केस में income effect will outweigh the substitution effect. I am talking about the inferior good, Hadi. Mustafa. So yes, as the price falls, you buy less. Yeah. And when the price increases, you buy more. Look at question number 6. A consumer's demand for two goods, X and Y. The indifference curve diagram shows the effect of change in the price of one of these goods on the consumer's equilibrium. G. Which डिमांड कर्व इज कंसिस्टेंट विद द डायग्राम? आपने बताना है कौन सा डिमांड कर्व इस डायग्राम के साथ कंसिस्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड वाई की जो है बेसिकली प्राइस फॉल कर रही है, जब भी आपका जो बजट लाइन है इट इज पिवटिंग आउट फ्रॉम द वाई एक्सिस। सही है, लेकिन योर क्वांटिटी इज सेम फॉर द गुड वाई, क्वांटिटी इज स्टिल एट Q1। पहले आप यहाँ पर से पॉइंट ए पे यू मूव टू पॉइंट बी, the quantity is same, although पहले आप पॉइंट ए पे थे, now you are at point B, तो आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही रिगार्डलेस ऑफ कि प्राइस ऊपर जाए। सही है, so which demand curve is consistent? There is only one demand curve, हाँ perfectly inelastic। सही है, आपका डिमांड जो होगी वो perfectly inelastic होगी, quantity of good Y will be constant here while the price will be changing। प्राइस कुछ भी हो, प्राइस P0 हो, P1 हो, the quantity won't change। Look at question number 7. In many developed economies, large and small firms often exist side by side in the same industry. What is? हाँ, it can be other way around. अगर I2 अंदर भी shift हो रहा है, so the price of good X is increasing, but still quantity the same है ना? The quantity is at Q1, regardless if the price is increasing or falling. In many developed economies, large and small firms often exist side by side in the same industry. What is most likely to explain the survival of the firms? Why do small firms survive? What is the most likely explanation? They each offer a much wider range of product. They have a higher minimum efficient scale. C is they pay much higher wages to their staff. And D, they provide a more personal level of consumer। हाँ जी, तो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज दे हैव
a more personal level of consumer service. हाँ आप जो है वो personal है, जैसे for example we have barber shops, say we have dentists, we have family doctors. They do exist despite of large salons, large hospitals, because of the fact that they provide personal level consumer services, and that is why consumers enjoy visiting them. The diagram shows the short run average cost and long run average cost curves for a farm. Which statement is correct? So you have short run average cost curve, SRAC1, SRAC2, SRAC3, and the long run average cost. Which statement is correct? When each of the three SRAC curves is U-shaped, it shows the existence of economies of scale. When the LRAC curve is upward sloping beyond output OQ, it shows existence of diseconomies of scale. C is when the minimum point of SRAC is below the SRAC1, it shows existence of the law of variable proportions. And D, when the minimum point of SRAC2 is below the SRAC3, it shows the existence of economies of scale. Remember, SRAC क्या होता है? SRAC is a short-term concept. सही है? हाँ, the diseconomies of scale, LRAC, is upward sloping after OQ, which illustrates the idea of diseconomies of scale. कि आपके diseconomies of scale हो रही है जब भी long run average cost is increasing, it is moving up. What is most likely to rise as a firm expands? Energy cost, the cost of component, the cost of monitoring, the rate of interest paid on borrowing. कौन सी cost सबसे ज़्यादा बढ़ेगी अगर आप most likely to expand अगर आप कर रहे हो? The cost of monitoring the worker. सही, जब भी आप हाँ, because अगर आप जो है वो increase करते हो अपने output scale of production बढ़ाते हो, one reason why you experience diseconomies of scale is because आपकी जो monitoring cost है, इस तरह की जो cost होती है HR वगैरह की, वो बढ़ जाती है. Managerial हाँ diseconomies. Moving to question number 10. In the long run, what is a feature of monopolistic competition but not perfect? कौन सी चीज जो monopolistic competition में होती है but perfect competition में होती है? That too in the long run. Remember, दोनों long run में normal profit बनाते हैं. सही है, तो वो तो फीचर जो है वो दोनों में है, परफेक्ट कंपटीशन में ना हो. A small number of buyers, product differentiation, existence of abnormal profits, the existence of barriers to entry. It should be product differentiation, because in the perfect competition you have products that are homogeneous, exactly same, but in monopolistic competition we do have product differentiation. A small European airline currently produces at point X on its long run average cost curve. It wants a bigger share of the European airline market and proposes to merge with another small European airline. The newly merged firm would produce at point Y on the long run average cost curve as shown. Why might the newly merged firm be able to produce at point Y? Why will they basically attain the advantage of economies of scale? The new airline can negotiate discounts when buying fuel. The new airline has many layers of management. The new airline is unable to hire enough pilots. And D, the workforce of the new airline lacks morale and is demotivated. हाँ भाई, तो कौन सी होगी? Economies of scale का reason क्या होना चाहिए? The new airline can negotiate discounted prices. Yeah, so they will have purchasing economies. बाकी सारों में आपकी cost ऊपर जाएगी. अगर आप if there is many layers of management, cost may go up. Airline is unable to hire pilots, तो वो अपना output नहीं बढ़ा पाएंगे, and the workforce of the new airline lacks more. The average cost will increase. Look at question number 12. A firm sells its products to consumers in two separate markets, M and N. Under which condition will a policy of price discrimination between the two markets be most profitable? Price discrimination profitable कब होती है? देखो, geographical distance जो है ना दोनों markets में होना चाहिए large. That is why it is difficult to transport goods. It is difficult for consumers to interact. And the second thing is that the PED जो है वो elastic होनी चाहिए. जितनी ज़्यादा elastic होगी उतनी ज़्यादा price discrimination कर सकते हो. हाँ, different price elasticity होनी चाहिए. So that is 1.8, 1.2, and large markets.
A community relies on a private company to supply electricity using a coal-fired power station. The power station causes air pollution, which imposes an external cost shown in the diagram. ये आपकी private cost है, and this is the social cost, which means कि आपने external cost को adjust कर दिया. The government decides to impose a tax on electricity company to correct the market failure. What represents the tax? Yes, I will upload the record. हाँ जी, कौन सा the vertical difference जो होगा ना वो आपका tax होगा. सही है, which is this difference in the two supply curves. ये जो आपका difference आ रहा है x y का, this is your amount of tax. Good job. Something that we used to do in the AS more often. The vertical difference will be the amount of per unit tax imposed. Some workers in a low-paid job decide to work longer hours to increase their disposable income. However, this decision reduces the state-provided benefit, leaving them no better off. What does this describe? Say जी उन्होंने low-paid job थी, so they are working longer hours. But as the disposable income increases, they are not entitled to state benefits. मतलब कोई खातिर खा उनकी income में इजाफा नहीं हो रहा. So what does that describe? This is a situation of liquidity trap. Oh, sorry, liquidity trap, poverty trap. Liquidity trap is when the increase in the money supply won't affect interest rates. Which policy is most likely to be least effective means of producing a more equal distribution of income? Least effective policy is least effective in a more equal distribution of income. The imposition of minimum wage levels below the level produced by the market, introduction of progressive personal income tax, payment of child benefits, the removal of sales tax. No, progressive personal tax will be a very good measure for equal distribution of income, ना बेटा, because अमीरों में ज़्यादा टैक्स लगेगा, चाहिए तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर हो जाएगी. बोले लीस्ट लाइकली. The imposition of minimum wage levels below the level produced by the market. Remember, minimum wage क्या होती है? Minimum wage is imposed above the market produced level ना, above equilibrium लगती है. लेकिन अगर आप minimum wage को below लगा रहे हो तो it will be ineffective firstly. और जब वो ineffective होगी तो आपकी income distribution में भी कोई impact नहीं आएगा as such, क्योंकि the equilibrium income will be unchanged. Look at 16. The table shows the main characteristics of employment in two occupations. Annual wages है 1 लाख X में, number of weeks annual leave है 5 weeks, average length of working week is 48 hours, job security is low, a length of training course to obtain the job qualification is 1 year. While in occupation Y, the average annual wage is 60,000, number of weeks annual leave is 10 weeks, average length of working week is 44 hours, job security high hai, and the length of training course to obtain job qualification is 2 years. What can definitely be deduced from the table? जी भाई, तो ये आपके पास दो comparisons आ गए. What can be deduced? Those employed in occupation Y attract greater importance to job security. Those employed in occupation X attract less importance to leisure activities. There will be more competition for places on training courses to enter the occupation X than occupation Y. And the occupation Y has more non-pecuniary advantages than occupation X. Why D? DY because it has more non-cash, non-pecuniary advantages ज़्यादा हैं उसमें. Annual weeks की जो छुट्टियां हैं वो भी ज़्यादा हैं, लेंथ ऑफ वर्किंग वीक भी कम है, जॉब सिक्योरिटी भी हाई है. सही है, इन सब चीज़ों की वजह से नहीं, बिकॉज आपके पास जो है ना उसमें डेटा कम है बेटा. That is why A and B won't be correct. जैसे for example ये है ना, those employed in occupation Y attract greater importance to job security. Job security is just one thing. सही है, हो सकता है कि they are more attracted to 10 weeks annual leave,
Yeah, they are more attracted to 44 hours working week. सही है. So that is why you cannot say for sure कि भाई ये एक reason है. So that is one thing, but the overall is के वहाँ पे जो है वो non wage benefits, non financial benefits जो है वो ज़्यादा है. And that is why employees can take a wage cut and be in occupation Y. सही, तो इसका हो जाएगा option D सही. Is that clear? अच्छा जी. Look at question number 7. The table 17. The table shows a farm that has 4 possible methods of production to make its desired output. Each method has a different cost and causes a different amount of pollution. The government rules that the polluting farms must buy pollution permits that cost $90 each. Each permit allow a farm to emit 1 ton of pollution. No pollution can be emitted without a permit. Which method of production has least total cost? अब आपने total cost निकालनी है, cost of production आ रही है 380, 320, 380, 480, 700, and these are the pollution cost 3, 2, 1 and 0. अब आपको बताना है कौन से वाले में least total cost है. सही, तो अब least total cost के लिए आप क्या करोगे? You multiply the pollution with 90. So ये आ गया 9, these are 270, 180, 90, 0. Add them up, 320 and 270 will be how much? $590. If I'm not wrong, this is 380 plus 180 will be $560. 480 plus 90. ये कितना हो रहा है भाई? 480 and 570. And this is $700. Say, so the only option which has least cost is 560 wala, which is option B. So moving forward, look at question number 18. How can GDP at market price be calculated if GDP at factor cost is known? Remember, आपके पास GDP at factor cost का क्या formula था? GDP at factor is equals to GDP at market price less taxes plus subsidies. तब आपके पास GDP is at factor है. आप क्या करोगे? You will deduct subsidies because subsidies will be deducted from here, and taxes अगर इधर आ जाएंगे तो add हो जाएंगे. So add taxes and subtract the subsidies. You will add taxes and subtract the subsidies. सही, तो B होगा इसका आंसर. If you have GDP at factor cost. GDP at market price है तो minus taxes plus subsidies, you will have GDP at factor cost. As you look at question number 19, which characteristic of population, the size of the informal economy, and the rate of inflation would mean the gross domestic product is likely to be relatively accurate as a comparison of standard of living? मतलब आपका GDP है, वो एक accurate measure है. कब होगा? That is very easy. Come on. जब आपका पहली बात है साइज ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी कम होना चाहिए. सही है, इट शुड बी स्मॉल. इनफॉर्मल इकोनॉमी आपकी स्मॉल हो ताकि जीडीपी जो है वो ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाए. दूसरी ये कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं होगा तो प्राइस का इम्पैक्ट आपके जीडीपी में बहुत ज्यादा आ जाएगा. सही है, और उसकी वजह से आपका जीडीपी ओवरस्टेट हो जाएगा, विच इज नॉट a good indication. And the third one is that the population should be stable. Population भी आपकी increase ना हो. सही है, वरना फिर पॉपुलेशन को आप एडजस्ट करो, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो, और इनफॉर्मल सेक्टर को एडजस्ट करो. Look at question number 20. The table gives the percentage of employment in primary, secondary and tertiary sectors in 4 countries. Which country is most likely to be a developed country? कौन सी कंट्री डेवलप्ड होगी? अच्छा जी, प्राइमरी सेक्टर 15, 30, 35, 45, secondary 40, 40, 45, 35%, tertiary is 45,
30, 20, 20. देखो टर्शरी इसका सबसे ज्यादा है, प्राइमरी भी इसका सबसे ज्यादा लो है. हाँ, तो बेसिकली इकोनॉमी ए will be the most developed economy which has higher percentage of GDP in the tertiary sector. Look at 21. The diagram shows unemployed person in million for year 2001 to 2016 for the European Union. During which period was the highest rate of increase? Highest rate increase हुआ सबसे ज्यादा. When was there a more incremental view of the graph? देखो between these years क्या हो रहा है, रेट जो है ना pretty much सेम है और यहाँ पे जाके थोड़ा फॉल भी कर गया, बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यहाँ पे बड़ा इंक्रीज हुआ. सही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे हुआ थोड़ा इंक्रीज और फिर नीचे आ गया. सही, अनएम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहे हैं, विच मीन्स सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो है ना वो इस टाइम पीरियड में आ रहा है, जहाँ पे ग्राफ जो है सबसे ज्यादा आपका स्टीपर जा रहा है. which means it should be 2008 से 2010 तक का मोस्ट प्रॉब्ली. हाँ यही होगा 2008 से 2010 तक का, वरना उससे आगे जो 10 से 12 आ रहा है, 12 में इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, 12 से 14 में भी नहीं. हाँ सही, तो इट शुड बी 2008 till 2010. A large coal mine is forced to close because of falling demand for coal, as the consumers switch to less polluting fuels. The government organizes retraining courses and recruitment events for the coal mine workers. Which type of unemployment is the government trying to reduce? कौन सी गवर्नमेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना चाह रही है अगर आपके डिमांड गिर रही है? there is a structural change in your unemployment because आपकी इकोनॉमी स्ट्रक्चरली मूव कर रही है फ्रॉम कोल, कोल और ये जो आपकी इस तरह की जो फ्यूल है टुवर्ड्स, हाँ, more efficient or less pollutant fuels. Economists have proposed that the best policy to promote development is trade, not aid. What is implied by this proposal? हाँ जी. Developing countries should become self-sufficient. Developing countries should be given greater access to markets in developed countries. Developing countries should use the foreign aid to invest in their export industries, and developing countries should use trade barriers to promote import substitution. हाँ कि भाई उनको greater access मिले markets का. Say so the developing countries should have higher access of markets in the developed economies. The table shows the value of selected macroeconomic variables over a period. What is the value of the multiplier? Multiplier की value क्या है? देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास एक्सपोर्ट्स हैं, आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एंड देन यू हैव द नेशनल इनकम. ये तीनों चीजें क्या है? दे आर योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. सही है. अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी? 20 से. एक्सपोर्ट्स बढ़े 10 से, and government spending increased करी 10 से. और all together the change in aggregate expenditure was 40. सही है जी. while the change in the national income कितना था भाई? 200. so आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? रिमेंबर k is equal to change in y upon the change in aggregate expenditure. so the change in y was 200, while the change in aggregate expenditure is 40, so it will be 5. The size of the multiplier will be 5. Look at question number 25. What is most likely to increase if the economy enters a negative output gap? क्या चीज सबसे ज्यादा बढ़ेगी अगर आपके हाँ आउटपुट गैप नेगेटिव हो जाए, आपका जीडीपी फॉल करने लगे, रिसेशनरी प्रेशर बिल्डअप होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर जाएगा. गुड जॉब.
Look at 28. Under which condition will a change in expansionary fiscal policy be most likely to take an economy out of a recession without too much inflation? हाँ जी, कौन सी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, रियल जीडीपी बढ़ जाए और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी इतना ज्यादा ना हो? देखो, एग्रीगेट सप्लाई क्या होनी चाहिए? एग्रीगेट सप्लाई शुड बी प्राइस इलास्टिक। जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी, अगर परफेक्टली इलास्टिक हो गई यस, तो फिर तो बिल्कुल भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं होता। सही है। दूसरा क्या है? वेज फ्लेक्सिबिलिटी लो होनी चाहिए। सही। एंड द डिमांड फॉर मनी शुड बी इंटरेस्ट इन इलास्टिक, बिकॉज अगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक है आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओगे भी तो इतना ज्यादा लोग जो है वो मनी की उससे डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करेंगे इफ दे हैव हायर जीडीपी, और आपके कंजम्पशन वगैरह बढ़ेगी। और वेज फ्लेक्सिबिलिटी लो होनी चाहिए, तो अगर वेज फ्लेक्सिबिलिटी हाई हुई, so obviously people will demand more higher wages, you will be caught in inflationary spiral, wage inflationary spiral. What could cause an increase in the transactions demand for money? Transactionary demand कब बढ़ेगी? Or fall in the price of bonds, or an increase in the nominal income, an increase in the interest rate, and increase in the unemployment rate. हाँ, कब बढ़ती है? जब आपके यहाँ जीडीपी, हाँ, जीडीपी बढ़ जाए बेसिकली। सही। जब आपके यहाँ जीडीपी बढ़ेगा, नॉमिनल इनकम बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली पीपल विल डिमांड मोर, क्योंकि कंजम्पशन आपके यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। What will lead to a reduction in the bank lending in a country? Bank lending reduce हो जाए, मतलब मनी सप्लाई नीचे चली जाए. An increase in commercial banks balance with the central bank and increase in the liquidity ratio operated by the countries. हाँ, अगर liquidity ratio बढ़ेगा, money multiplier reduce हो जाएगा. सही है। और जब money multiplier reduce हो जाएगा, आपके यहाँ मनी सप्लाई या लैंडिंग जो है वो नीचे चली जाएगी. Look at question number 29. The table gives details of inflation and unemployment rates for different countries in 2008 and 2011. So ये inflation rate है 2.3 से 2.89, 3.16, 2.29, 2.75, 2.48, and then it went to negative in Japan. Unemployment rate था 6.15, 7.4 बढ़ गया. Inflation बढ़ा, unemployment भी बढ़ गई. 7.81, 9.68, 7.6, 5.9, 3.99, and then 4.5. Which country or countries experience the trade-off between inflation and unemployment? कौन सी कंट्रीज आपके यहाँ ट्रेड ऑफ फेस कर रही है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है? हाँ, देखो जापान, फ्रांस में क्या हो रहा है? फ्रांस में अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर एनम नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जा रहा है. सही है। जो आपका वो शॉर्ट टर्म फिलिप्स का होता था. एंड ऑल्सो इन जापान, तो जापान में जो है वो डिफ्लेशन हो गया, रेट नेगेटिव में चला गया और अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर चली गई. सो इट शुड बी फ्रांस एंड जापान. Look at question number 30. The government decides to raise the rate of value added tax. What does this suggestion suggest is the government's main macroeconomic objective? गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रही है. सो इससे क्या होगा? To reduce the budget deficit, to reduce income inequality बढ़ेगी. To reduce the level of unemployment can also increase, and inflation can also. Budget deficit आपका reduce हो जाएगा because government का tax revenue increase कर जाएगा, और जब tax revenue increase करेगा तो budget deficit probably will go. सही है जी. Are we good up to here? Is there any question?